Yes, it's recording. Yeah, a very warm welcome to all our Icy Tales listeners. Today we have a very special guest with us, Pritika Loonia. She is a side hustle coach, she's a content creator, and above all, she's a YouTuber with a massive following of, I guess, above 3.5 lakhs. If I'm right? So, hi Pritika, how are you? I'm good. Thank you so much for inviting me here. Really excited. It was our pleasure. So, how are you? How's the day going? Yeah, it's going good. Okay. आज एक्चुअली बच्चों का So, छुट्टी है तो okay, थोड़ा या सब कुछ okay. थोड़ा बहुत. So why don't we start with you telling our audience a little bit about yourself? Okay. So I started my journey in 2017 and I Okay. started because उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे and मेरे Okay. पास और मतलब 3 साल के थे and I have twins. So there are Okay. limited options because बच्चों का पूरा responsibility and I wanted to give time to my kids. I didn't wanted to do anything. But eventually start किया था YouTube channel. पहले तो ऐसे ही शुरू किया था but then it became थोड़ा बहुत बड़ा. So I started working like almost हर दिन दोपहर में 2 घंटा देती थी. And then eventually when it grew, I started making videos on how people can start working from home, free time में कब क्या कर सकते हो. And धीरे धीरे अब उसको मैंने अपना फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू किया आईफोन कवर्स का coverful.in के नाम से. एंड देन आई अंडरस्टूड कि इट्स सो इजी कि घर से भी कुछ किया जा सकता है. आई मीट सो मेनी पीपल हु कीप सेइंग कि यार मेरे को कुछ करना है पता है बट समझ में नहीं आ रहा क्या करूं. दिस इज लाइक सच अ कॉमन थिंग स्पेशली व्हेन योर किड्स आर ग्रोइंग. नाउ यू हैव टाइम जो पहले नहीं हो पा रहा था एंड यू वांट टू डू समथिंग विद योर लाइफ. तो फॉर दैट आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज अबाउट हाउ टू डू बिजनेस फ्रॉम होम एंड ऑल दैट. एंड देन आफ्टर जब मैंने खुद अपना बिजनेस शुरू किया जब मेरे को पूरा सीढ़ी समझ में आ गया व्हाट आर द स्टेप्स दैट रिक्वायर्ड टू डू एन ऑनलाइन बिजनेस आई मेड अ कोर्स कि ताकि मैं स्ट्रक्चर्ड वे में सबको सिखा सकूं. सो आई बिकेम अ साइड हसल कोच एज वेल और इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ. Okay. Yeah, because I feel like when you're going to college, when you're a college student, that is the time when you have time and you are looking for opportunities like that, because we want to, in a way help our parents, if not with fees, then with miscellaneous stuff. So that is true. So, what was that point which actually inspired you to become a content creator and this coach, side hustle coach? Was there a, point in your life? Yes, it was actually the point when I decided to start my YouTube channel. I started my YouTube channel with parenting videos. ठीक Okay. है, I used to talk only about parenting and why that idea came into my mind because I was standing outside. मेरे बच्चों को किंडर गार्डन में थे उनको लेने गई हुई थी मैं. एंड देयर सब मॉम्स डिस्कस करते हैं कॉमन प्रॉब्लम्स एक दूसरे से. तो Yeah. वही कॉमन प्रॉब्लम हर दिन की तरह डिस्कस हो रहा था कि बच्चा दूध का बॉटल छोड़ रहा नहीं है और डायपर Yeah. पहन के रखता है और सो कॉमन थिंग्स की टीवी बहुत देर तक स्क्रीन टाइम कम करने से रोने लग जाता है जिद्दी. एंड सेम प्रॉब्लम्स हम सब मदर्स को होती है. Yeah. ठीक है. एंड देन आई वाज थिंकिंग व्हेन वी वर डिस्कसिंग दिस थिंग्स कि मेरे 2 बच्चे हैं एंड दोनों का बिल्कुल ऑपोजिट नेचर है. But still, I am not struggling as much as they are saying. So maybe I'm doing something right. Right. Okay. Yeah. So I thought, why not share it with the world? I just came home and I searched in YouTube and everywhere कि parenting का ऐसा क्या है. मेरे को सिर्फ ये मिला कि slide show चल रहा है and people are talking, giving a voice over. Like Okay. there was not one video where a person is actually talking about from the experience. Okay. सो आई फाउंड दैट गैप एंड आई थॉट कि चलो करते हैं. तो ऐसे ही मोबाइल से शुरू कर दिया. सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती थी कि मैं किस चीज को कैसे हैंडल करती हूँ. एंड Okay. पीपल रियली स्टार्टेड टू कनेक्ट बिकॉज इट वाज नॉट रेड आउट फ्रॉम फ्रॉम अ ब्लॉग और समथिंग. ये एक्चुअल मेरे एक्सपीरियंस से निकल रहा था तो पीपल कनेक्टेड वेल एंड दैट्स हाउ इट ऑल गॉट स्टार्टेड. So it basically started as a parenting blog, sort of. यस यस यस. And how did you, in your initial time, how did you manage, creating content and your family? Because you have to have a balance between these two. So how did you manage? As I have said many times in my videos, I'll say it here again कि मैं क्या करती थी रोज दोपहर को 2 घंटे जब बच्चे सब सोते हैं फैमिली मेंबर्स सब सोते हैं. आई डेंट हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग इन द आफ्टरनून. सो आई यूज्ड इट. आई यूज टू इवन इन माई अर्लियर वीडियोज लाइक रियली ओल्ड वीडियोज जब स्टार्टिंग का था. आई एम कीपिंग माई ईयरफोन ईयर और ईयरफोन का माइक को ऐसे पास में रखा हुआ है एंड आई से टू द पीपल कि मैं धीरे बोल रही हूँ बिकॉज माई किड्स आर स्लीपिंग. I don't Okay. want to wake them. And there are so many comments. It is so relatable कि parents talk slowly क्योंकि Yeah. बच्चे सो रहे.
तो पीपल वांटेड दैट, सो दैट इज हाउ आई यूज्ड टू डू। थंबनेल वगैरह रात को बना लेती थी सोने से पहले, उस टाइम भी बच्चे सो जाते थे, तो आई वाज नॉट लाइक, आई वाज नॉट स्पेंडिंग द होल डे ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। दोपहर का 2 घंटा मेरा फिक्स था, कभी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता तो इट्स अ बोनस ओनली। Organized. यस। Okay. Because, yeah, I mean, you can't be just doing one thing and leaving out one thing. You have to have a balance. So I feel like in your case, that was organization. Like I guess you organize things pretty well, and then it developed into a habit. So were there any, challenges or setbacks? Like challenges and setbacks are things which you face at each and every level. It's not something which you face and now you're done with it. So, what were some challenges and setbacks that you face now when you are creating content and you're a coach? Some challenges that you face on a regular basis. सी द बिगेस्ट चैलेंज विच आई थिंक कि हर कंटेंट क्रिएटर को होता है, इज कि जब आप स्टार्ट करते हो, इट्स लाइक डूइंग अ जॉब बट Mm. यू आर नॉट गेटिंग पेड। आप Yeah, कितना टाइम तक जॉब करते रहोगे विदाउट गेटिंग पेड, विदाउट गेटिंग रिवॉर्ड, विदाउट गेटिंग अप्रिसिएशन? कुछ तो वापस मिलना चाहिए ना। सो इट्स रियली हार्ड टू कीप ऑन डूइंग अ जॉब। वही वाला कंटेंट में भी होता है कि यू डोंट नो व्हेन योर वीडियोस विल गेट वायरल और व्हेन इट विल वर्क। इट माइट टेक 6 months, 6 days or 6 years. more. You Yeah, don't know. You know, it also depends कि how much you are learning and how much you are changing your content depending on that. So वही सबसे बड़ा चैलेंज था। तो फॉर दैट ऑल्सो आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग माई चैनल दैट फॉर 1 year, फॉर 1 full year, आई विल नॉट एक्सपेक्ट 1 rupee इन रिटर्न। आई विल नॉट कीप अ डेडलाइन फॉर मी कि मेरे को 1 साल में 1,000 सब्सक्राइबर बनाना ही है, बिकॉज इट्स नॉट okay, इन माई हैंड। हाउ कैन आई कीप अ डेडलाइन? हाउ कैन आई गिव माई सेल्फ सम नंबर गोल्स? आई कैन नॉट। सो आई जस्ट प्रॉमिस माई सेल्फ कि 1 साल तक आई पुट कीप ऑन गिविंग कॉन्टेंट। अगर कुछ नहीं हुआ देन आई स्टॉप इट एंड ट्राई समथिंग एल्स, बट इट वर्क विद इन लाइक 4-5 months. that's actually nice. And when I actually got to know that, I'll be interviewing you, that was when, because I am personally in that point where I'm trying to grow my, like, Instagram. I'm trying to do something out of it. And what you said about, in each and every reel, you see that, you have to set up a goal. You can set up a goal. You can, read out these affirmations that, ha, ek saal mein you'll be getting these followers. And you said something different, that don't keep a goal, which is quite true, because you don't know. It can happen in 4 months, it can happen in 4 days, it can happen in 4 years or more than that. So that is actually true, because personally, that's the, I guess, biggest challenge. Like, kab hoga, kaise hoga, why isn't growing? So it kind of mentally, it kind of, you know destroy you slowly, that nahi ho raha hai, it's not growing. So that's actually a nice point. So the इंस्टेंट biggest ग्रेटिफिकेशन नहीं question, मिलता है तो फिर बहुत ऐसे हो जाता है, क्यों नहीं हो yeah. रहा, क्यों नहीं हो रहा। So it's nice that you just, in that, what you said, that just keep in putting efforts, and jo hoga so hota, dekha jayega. So the biggest question is, how can, influencer, or how do you come up with, content ideas? How do you come up with ideas for your Instagram or for your YouTube? And what advice do you have to give out to people who are trying to look out for content? They say you have to post a certain amount of time in order to see growth. And also, how do you batch? They say there's a term that batch create. आज So या how do you कंटेंट come बैचिंग। up with content ideas? सी मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट आइडियाज इज अ वेरी क्रिएटिव थिंग Mm, एंड यू कैन नॉट पुट योर सेल्फ इन टू अ क्रिएटिव जोन। mm, क्रिएटिवनेस कभी भी अचानक से ड्रॉप करता है। mm. some idea will suddenly randomly, you are doing a very random thing and it will click. The problem with most people is when it's clicking they are thinking अरे हाँ इस पे वीडियो चल जाएगा, मेरे को इस पे बनाना है, but they don't note it down, and then you won't remember if you don't note it down. So my biggest point is मेरे को कभी भी, I have a WhatsApp group, it is pinned on my WhatsApp and there is nobody else other than me in that group. Okay. ओके, इट्स आइडियाज रिटन ऑन इट। अभी तो मैंने बहुत सेग्रीगेट कर दिया, बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग फील्ड, क्योंकि पॉडकास्ट का अलग, इसका अलग, उसका Yeah, अलग। okay. Yeah. या बट इनिशियली आई ऑलवेज हैड कि मेरे को कुछ भी कभी भी ध्यान में आया, रात को 12 बजे में नींद में जाने वाली कुछ आइडिया, आई मे बी इट्स नॉट स्ट्रक्चर्ड, इट्स नॉट वेल प्लान्ड, जस्ट इफ आइडिया क्लिक्ड आई राइट इट डाउन, आई नोट इट डाउन। आई इवन यूज अ टूल कॉल्ड ट्रेलो। Okay. If you are aware about it, it's a very good tool. It's like a note app only, but very organized notes. Okay. You should definitely try, कोई भी कंटेंट क्रिएशन में उसको तो जरूर करना चाहिए ट्रेलो ऐप को।
तो दैट इज देयर। ये तो हुआ कि क्रिएटिव आपको जब खुद आइडियाज आते हैं ना। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू यू रिसर्च अबाउट इट, हाउ डू यू फाइंड आइडिया फ्रॉम ओनली गेट इंस्पायर फ्रॉम अदर पीपल्स कंटेंट। दैट इज YouTube is there are so many websites, there is called Yep. Answer Socrates बोल के एक है। इसमें इफ यू जस्ट टाइप योर नीश, दे विल बी लाइक हाउ से रिलेटेड 10 टॉपिक्स आ जाएगा, वाई से रिलेटेड 10 टॉपिक्स आ जाएगा, व्हेन से रिलेटेड 10 टॉपिक्स आ जाएगा। आपको कभी भी एग्जैक्टली जो लिखा हुआ आ रहा है उस पर वीडियो नहीं बनाना है, Yep. बस उससे रिलेटेड यू जस्ट हैव टू गेट इंस्पायर्ड। Right. यस, एंड व्हेन यू आर इन अ क्रिएटिव जोन यूज इट वाइसली उस पे, और तब फिर और ज्यादा उस जोन पे जाओ। यू कैन इवन इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू हुएवर इज वाचिंग, टेक लाइक 2 घंटा के लिए कैफे पे चले जाओ। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा शोर है, फैमिली एवरीथिंग है, 2 घंटा 1 घंटा के लिए कैफे पे चले जाओ, ईयरफोन्स लगा लो ताकि बाहर का कुछ नहीं सुनाई दे, एंड Okay. जस्ट थिंक, यू नो द क्रिएटिव juices will start flowing. Okay. Yeah. Okay. Because this was something which I also kind of struggle with my own account, and I used to use, because you can't just copy paste, Yeah, you and can't. you can't be just, and even if you do, even if someone is doing It that, won't they work. won't be seeing growth, Yeah. like the other person is. So that is true. पीपल नोज, अभी लोगों का BS फिल्टर है ना, बहुत बड़ा हो गया है। दे Mhm. कैन सी व्हाट्स कॉपीड एंड व्हाट्स ओरिजिनल। Yeah, it's true. You were saying that actually read that you grew your account in like 4 months. So यस, you grew your you were talking about your इंस्टाग्राम Instagram, अकाउंट, or you were talking इंस्टाग्राम about your यस। YouTube? नहीं, Okay, so इंस्टाग्राम। so you अभी have लास्ट के इवन एक्चुअली ग्रो तो 2 महीना में ही किया है। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सीरियसली इंस्टाग्राम फ्रॉम लास्ट 4 months. okay, Okay, and I have been creating series because when you create content from so long, no, you have an idea कि क्या वर्क करेगा क्या नहीं करेगा। okay, ठीक है, बट बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, पहले मेरे को बड़ा वीडियो बड़ा कंटेंट में आई नो हाउ टू मेक इट, शॉर्ट कंटेंट में हाउ टू गेट अटेंशन इट टुक मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड how okay, videos will get viral, how things will work out for you. Okay, so when you are making short videos, I created series. So I okay, just wanted, because I know कि क्योंकि YouTube में भी यही होता है कि any one of your video might go viral. uh, So when you are making a series, number one, I am making inspiring story number one, inspiring story number two. If inspiring story number 14 gets viral, people will be like, there are other 14 videos. So they will come to my profile and hit that follow button or watch my other videos. So that really helped me. ये मेरा शुरू से प्लान था, बट वॉट अभी लास्ट 2 महीने में आई वॉज 2 महीना पहले लाइक अगर मे के स्टार्टिंग में यू वुड हैव सीन माई प्रोफाइल, इट इज 2500 फॉलोअर्स okay. ओनली। So from there you got it आई to, एम I guess, टुडे above 53। 3K. Yeah, यस, I got it. यस, Fine. That is actually huge. So first you started on YouTube, then you moved on to Instagram, and then now you have a podcast too. यस, यस। Okay. पॉडकास्ट शुरू हो गया था इससे पहले ही, इंस्टाग्राम पे काम करने से पहले ही आई स्टार्टेड। या Okay, so now coming on to the side hustles part. So first of all, I only have the first question that I have is, what tools or resources, according to you, we need to have in order to start a side hustle? if you are starting an online business with the side hustle, all you need is just an idea कि किस प्रोडक्ट का करना है, niche it Mhm. down properly. ओके, डोंट बी कंफ्यूज कि होता है ये कंफ्यूजन कि कभी Yeah. इसको देखते तो लगता है इसका कर लूं, कभी उसको देखते तो लगता है इसका Yep. बिजनेस कर लूं। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। सो व्हेन आई टीच माय स्टूडेंट्स, आई टीच दिस ओनली कि बहुत सब, जैसे 2-3 चीज में, एक स्टेशनरी करने का सोचा हुआ है, बेडशीट करने का भी सोचा हुआ है, और कॉर्ड सेट करने का भी सोचा हुआ है। मेरे को ये तीनों चीज बहुत पसंद है, बट आप तीनों चीज, इफ यू आर डूइंग एवरीथिंग, यू आर डूइंग नथिंग। ठीक है, सो आई टेल देम कि इफ यू रियली लाइक दिस 3 आइडियाज, ओके फाइन, राइट, तीनों चीज लिखो। Mhm. Take a notebook and write all your ideas, and then I have this whole structure where I teach कि उसमें लिखो कि मार्केटिंग आप कैसे करोगे, उसमें लिखो कि आपको होलसेलर कहाँ से मिलेगा, हर एक कैटेगरी में लिखो, उसमें लिखो कि आपके सिटी में वो कितना उसका डिमांड है, उसमें लिखो कि ओवरऑल हर जगह ऑनलाइन करोगे तो पूरे इंडिया में बेच सकते हो, तो ओवरऑल हर जगह कितना डिमांड है। सो दिस इज लाइक 4 थिंग्स, आई हैव 11 स्टेप्स की 11 चीजें लिखनी है। सो व्हेन यू राइट 11 थिंग्स, नो, यू विल सी सम क्लैरिटी कि यार इसका होलसेलर मिलना बहुत मुश्किल है, सो आई शुड स्टिक विद कुर्ती ओनली, और आई शुड स्टिक विद Okay. बेडशीट्स ओनली। मे बी इन माई सिटी कुर्ती का इतना डिमांड नहीं है, पर बेडशीट्स अच्छे चल जाएंगे। सो व्हेन यू स्टार्ट फिल्टरिंग थिंग्स आउट, you have one final product in hand.
and then you just have to focus on that. You have to build up branding. सब चीज यूट्यूब में फ्री में मिलता है यार. इफ यू कैन नॉट गो फॉर अ कोर्स, दिस नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड. कोर्स किस लिए होता है कि यू डोंट हैव टू सर्च एवरीवेयर. सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक जगह में मिल जाए और एक्सपर्टी भी मिले, है ना. बट दैट्स ऐसा नहीं है कि कोर्स नहीं लेंगे तो कर नहीं सकते. ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा सोचने का जरूरत भी नहीं है. यूट्यूब में सारे आपको, आप सिर्फ सोचो क्या ब्रांडिंग करना है, ब्रांडिंग के बारे में सारे वीडियो सुन लो, सारे पॉडकास्ट देख लो, देन स्टार्ट मेकिंग योर ब्रांड. लोगो बनाओ, स्टिकर्स छपवाओ, everything whatever goes with it. So this is how you get started. Yeah. So basically, you just help them pin it down. If they Yes. are confused, they have so many options, you help them pin it Yes. down. I help them pin it down, and then also like everything is covered ki how to solve shipping problems, because people will ask COD all the time. Even in Yeah. my business 95% sale hai, COD ka only 5% is prepaid sales. So India में COD बिना you cannot do an online business. So how to give COD options, how to have a shipping partner that is right for you, how to set your courier free देना है या नहीं देना है, pricing कैसे रखते हैं. Like a lot of people को confusion रहता है कि if I have a bottle and I'm selling it in, I bought it in 100 rupees, so I can sell it in 150, 50 rupees is my profit. But that's not how it works. The bottle costed you 100 rupees. पर आपने जहां से खरीदा है, अगर आप कोरियर से मंगा रहे हो, कोरियर में बल्क में मंगाया, 2,000 रुपया लगा, 1,000 रुपया लगा, 500 रुपया लगा, तो उसका भी कुछ पार्ट इसमें हो ऐड करना जाएगा. है. Yeah. वो उतना आपका कॉस्टिंग होगा. अगर आप जाके लेके आ रहे हो तो आपका टैक्सी खर्चा हुआ, आप अभी इन्वेंटरी कहीं भाड़ा लिए हो तो रेंट लिए हो, उसका खर्चा हुआ, वो सब ऐड करके एक प्रोडक्ट का प्राइस निकलता है. ये मत सोचो 100 में लिए तो 100 रुपया में 50 मेरा प्रॉफिट है. जब जो लोग ऐसे करते हैं वो धीरे धीरे देखते हैं यार मेरे पैसा नहीं बच रहा, मेरा सेल हो रहा है बट आई एम नॉट इन प्रॉफिट येट. हाउ, वाई? बिकॉज यू आर नॉट putting the price right. So all these are covered in the course, and You have not to do only the, this. yeah. Yeah. So you have to Not do the complete research. Yes, not only this, also कि क्योंकि क्या होता है ना, आप एक कोर्स दे दिए किसी को और आप सोचते हो सब कुछ खुद कर ले. जरूरी नहीं है कि सबको देख के सब कुछ समझ में आ जाए. इसलिए हम लोग बाई वीकली, मतलब हर 15 दिन में एक बार, ऐसे से हम लोग अभी बात करें इस तरह से वीडियो कॉल में बात करते हैं, वेयर दे टेल मी देयर इश्यूज कि कहाँ पे अटक रहे हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आई सॉल्व लाइव. ऐसे ही हम लोग बात करते हैं. देन वी प्लान कि नेक्स्ट वीक में क्या करना है, थिंग्स लाइक दैट. या Now, once we do start our side hustle, okay, just for example, one has started their side hustle or their small business, online business. What things do you suggest? How can one stay motivated? Being a small business owner is not easy, and you have to face a lot of. It take time to grow. It doesn't skyrocket or something like that. So, how can one stay motivated? आई विल स्टॉप यू फॉर 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड. हाँ, Yeah, 1 मिनट. okay. हर्षित का भी ले जाओ. डन. किसका डेट? इसका गेट यही तो. Yeah. Yeah, So you said how to stay motivated. motivated. देखो ऐसा है कि यही फर्क होता है कंटेंट क्रिएशन में और साइड हसल में. जब आप मैं जितने जन को जानती हूँ जिन्होंने साइड हसल शुरू किया, नोबडी गिव्स अप इजी. व्हाई? कंटेंट क्रिएशन में आपका कुछ लगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा आपने एक ट्राइपॉड खरीदा, मोबाइल से ही शूट Yeah, कर रहे हो, yeah. और मेहनत लगा. Mhm, मेहनत लगा, बट देन थोड़ा दिन नहीं हुआ, यू गिव अप. बट वेन mhm. यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, यू Putting पुट in योर मनी इनटू इट, money. यू पुट योर हार्ड वर्क. आप खुद जाके प्रोडक्ट पसंद करके लेके आए हो. यू आर पैकिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम योर ओन हैंड्स व्हेन द ऑर्डर कम्स इन. द जॉय ऑफ द क्लिक बटिंग बटन की ऑर्डर आया है, जो क्या बोलते हैं डोपामिन होता है उस टाइम पे, Mhm, दैट्स सो हाई दैट पीपल डोंट इजीली, दे डोंट नीड आउटसाइड मोटिवेशन. उनको उल्टा ऐसा रहता है कि सपोज घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो यार मेरे को, मैं कब वापस अपने काम पे लगूं. mhm. जितना मैं खुद जानती हूँ कितने लोगों को, कि बिकॉज इट्स लाइक अ बेबी. कोई भी बिजनेस ओनर को आप पूछोगे ना, व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच योर सेल्फ, इट्स योर बेबी. यू डोंट नीड एनी मोटिवेशन, यू खुद यू विल वर्क फॉर इट. Okay. So that is actually true. I never
thought of it in that way. The thing you that the thing you said about, when you're creating content, you're just buying a tripod. I only have a tripod, and I'm posting content on Instagram, then I'm a ghost for another 2-3 months. But when you have a small business, even my classmates have their small business, and they're just, some of them not only packing, they're making it, with their own hands. They're making scrunchies, they're making clips and all that. So it is like a baby to them. So that is true. And what, according to you, would be the one misconception that people have about starting a side hustle? That it requires huge investment. Okay, it I think doesn't. you just have to be smart with the product you are choosing. If you have budget constraints, only if you have. Otherwise, choose a product which you really wish to sell. बट अगर बजट का इशू है, सी एक एग्जांपल देती हूँ आपको. अगर मैंने टी शर्ट का काम किया, आई गो एंड बाई रेड कलर का टी शर्ट, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसका लिया SML XL, 4 साइज लेना पड़ा मुझे, ठीक है. एंड देन रेड में अगर ब्लू भी अच्छा लगा तो उसका भी 4 साइज लेना पड़ेगा. तो एक ही SKU, एक ही है प्रोडक्ट, एक ही है, बट मेरे पास 8 इन उसका स्टॉक है, इन्वेंटरी 8 पीसेस का है. 8 पीसेस का मेरा पैसा भी लगा. नाउ इफ आई सेल इयररिंग्स इज सेम साइज फॉर ऑल. I can buy 8 different designs and I can Yeah. post on my social media 8 different designs for the same price. Yeah. If I sell handbags, it's one size fit all. So it's just a little of smart work when budget issue होता है. Okay. तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर हमारे पास Yes. इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, आई विल से इवन 3,000 में यू कैन स्टार्ट, इवन 5,000 में यू कैन स्टार्ट. उससे कम और क्या करना है बताओ यार. Yeah. And I feel like, be it a content creator, if you're putting content out there, or you have an online business or anything, you're just putting yourself out there. Criticism and negative comments and all, criticism is something else, but nowadays Trolls. the trolls and negative comments have started coming up, and they're saying it's just a criticism, you have to be, tum itna to criticism le hi sakte ho if you're putting yourself. But that's not a criticism. You're kind of directly, someone is body shaming someone, or they're just putting hate out there. So did you have, those kind of trolls or negative comments under your content, under your post, and how do you deal with them? See, as you have itself addressed it, ki you have put yourself in public platform. Yeah. So when you choose to be on any social media, you are choosing to be available for public to comment. Okay. हमेशा लाइफ में अच्छे लोग ही जिंदगी में नहीं आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे. And you Yeah. cannot stop it because you are choosing it. Just like a celebrity saying ki I need private space. We understand, I and you understand, but not everybody does. That's why people are running behind them to take pictures. You won't run, you will give them privacy, I will give them privacy, but not everybody will. सेम वही चीज यहाँ पे भी होता है, ठीक है. मेरा भरा हुआ बॉडी शेमिंग के लिए, इतनी मोटी हो, ये हो, वो हो, हेयर्स के लिए, तुम लड़का हो या लड़की हो ये तो पहले कंफर्म कर दो हम लोग को. आई कैन नॉट इवन टेल यू व्हाट पैथेटिक. इफ समथिंग इज लाइक रियली ग्रोस, आई जस्ट डिलीट इट. Okay. मोस्टली तो देखो, जब when you start growing and you have too much comments, you cannot even read all the comments. Yeah. ठीक है. स्पेशली जब रिप्लाईज में आता है, वो तो आपको नोटिफिकेशन में भी नहीं बताता कि that's in a reply. Like if you are getting like Yep. hundreds of comments every day, you cannot scrutiny everything, right? So yes, because I chose to be in platform, I am happy कि उस वीडियो को देखे 5,000 जन ने मेरे को फॉलो किया. उनको मेरे पे भरोसा है कि मैं और अच्छा कंटेंट दे सकती हूँ, कुछ वैल्यू दे सकती हूँ. So it is really hard. It's not as easy as I'm saying कि ignore करो and keep moving, think about the brighter side. It's not always that easy, but there's no other choice. You will have to ignore. Because you're putting yourself out there. Yes. We chose this life. Mhm. Okay. And what, according to you, are some of the common mistakes that one makes when they are starting a side hustle or an online business that you have observed in your career? Not being active on social media. Mhm. Because सिर्फ ये सोचना कि मैं अपने शहर में बेच के खुश हूँ. क्यों खुश हो Hmm. यार? You can sell to the whole India, whole Whole world. world.
Yeah. Why do you even want to stop? And social media आज के डेट में कहाँ से कहाँ ले जा सकता है. All you have to learn is थोड़ा सा वीडियो कैसे लेते हैं. People make mistakes in अंधेरे में वीडियोस लेते हैं. अंधेरे में लिया हुआ वीडियो कभी भी रैंक नहीं करेगा unless something is very creative or something. That's so very rare. आप खुद जब स्क्रॉल कर रहे हो ना, आप देखना कभी भी आप हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले वीडियो कोई स्क्रॉल कर रहे हो क्योंकि वही रैंक हो रहा है. Yeah. Yeah, yeah. So you have to, that doesn't mean you have to spend money or buying an expensive iPhone or camera. ठीक है. अभी हम लोग जिस नॉर्मल फोन में जो जितना मेगापिक्सल का कैमरा है ना, 90s में उतने मेगापिक्सल में मूवी बन जाते थे. तो वो लोग मूवी बना रहे हैं और हम लोग एक छोटा सा वीडियो 30 सेकंड का बनाने के लिए इतना हिचकिचाते हैं. वी वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट ये परफेक्ट वो. That's the So biggest. basically, being consistent Yes. and not just being a ghost on on social media. Okay. And finally, I just have one last question for you. The highlight of the video. One advice you would like to give out to someone who is just starting their side hustle. Just start. Just start. That is the one advice I give to everybody. कि वो स्टार्टिंग वाला ही पॉइंट मुश्किल होता है. जस्ट कीप ऑन थिंकिंग कि मेरे को करना है करना है. वी आर सेविंग वीडियोस, वी आर सेविंग कंटेंट, वी आर सेविंग होलसेलर का नंबर, फेसबुक में कुछ पोस्ट पढ़ लिया उसके रिलेटेड, सब कुछ सेव कर रहे हैं, ग्रुप बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट शुरू नहीं कर रहे हैं. वेटिंग इट कि उसको शुरू करेंगे. तो Waiting for the डोंट right वेट. time. यस, राइट टाइम इज नाउ. राइट टाइम इज नाउ. जस्ट गेट स्टार्टेड. एंड शुरुआत में इतना मत टेंशन लो कि क्या होगा नहीं होगा. जस्ट गेट स्टार्टेड. अगर इतना टेंशन है भी तो फिर स्टार्ट स्मॉल. डोंट इन्वेस्ट टू मच इनटू इट. तब ज्यादा ये टेंशन भी नहीं रहेगा, हेडेक भी नहीं रहेगा. इवेंचुअली Because यू विल फाइंड द वे. या. because वो कल कभी नहीं आएगा. I'm going to start from tomorrow. That tomorrow is never going to come. Never going to come. Yeah. And people wait for perfectionism, no? कि सब कुछ मेरा Yeah. वेबसाइट परफेक्ट दिखना चाहिए, मेरा इंस्टाग्राम का जब तक मेरा लोगो बन के नहीं आएगा मैं पेज नहीं बनाऊंगी. आपका लोगो बनने में टाइम लग रहा है, आपका पेज का नाम तो आपने फाइनल कर लिया, देन स्टार्ट booking it, start making pictures, clicking pictures of your products and start posting. Okay. Yeah. So that was all of the questions that I had for you. Lastly, thank you so much for giving me a few minutes out of your busy schedule, I'm sure. And Someone's at the door. Someone's at the door. I'm oh, so sorry. yeah. Right. See, even in So that half an hour ka meeting, I have got up twice. That, it's okay. that Okay. no, Anna, I'm saying ऐसा होगा, but अपने को रुकना Yeah, नहीं है, it's अपने को true करते because you जाना है. have a life. ये You, हम if we think that you are a student. yeah, I'm a student. Okay, so it might be not that related right now, but if a housewife is listening, we बहुत सारे जन ये सोच के रुक जाते हैं कि क्योंकि हमारे का फैमिली का इतना, ये बच्चों का घर Yeah, का इतना सब कुछ है, मैं मैनेज कैसे करूंगी. ठीक है. तो ये होगा, ये होते रहेगा. अभी मैं इस मीटिंग में 2 बार उठी हूँ. दैट 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 डजंट मीन कि मैं अब करना बंद कर दूं क्योंकि ये डिस्टरबेंस आ रहे हैं बार yeah, बार. yeah. उसको हम लोग पता करते करते आदत हो जाएगा. Balancing. Yes, it will work out. If you are determined, it will work out. Okay. Yeah. Okay. So thank you so much for this insightful, this valuable information. And thank you so much again for giving me a few minutes out of your busy schedule and being here with us. I'm sure people who are going to watch this, teenagers or anyone, they will get inspired and they will start their journey. Thank you And so much for inviting me. I had so much fun talking with you. it And was to your my listeners, pleasure. please just get started. And if you wish to find me, कैप्टन प्रतिका के नाम से किसी भी सोशल मीडिया में चले जाओ, मैं मिल जाऊंगी आपको. We can connect. You can just send a DM or email something. Okay. Okay. So it was nice talking to you. Have a nice day. Thank you. Bye. Bye bye.
Have you stopped recording?